Hello guys, welcome to my channel Bunyad Classes. Today we will discuss Mathematics Class 10 Chapter 8 Introduction to Trigonometry. First of all, before starting the chapter of trigonometry, we have to clear the concept of trigonometry. Okay, start. First of all, we have to know the meaning of trigonometry. What is the meaning of trigonometry? Tri means in Greek language 3. Gon means side and metry means मेज़र. 3 साइड को मेज़र करना ट्रिग्नोमेट्री होता है, याद रखना है. तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी ओनली राइट एंगल ट्राइंगल, नॉट आइसोसेलेस ट्राइंगल, नॉट इक्विलेटरल ट्राइंगल. ओके, सो लेट्स टेक अ राइट एंगल ट्राइंगल like this is a right angle triangle which is 90 degree. Let's take a side A, B and C. These are the sides of the triangle AB, BC and AC. Okay, and these are the angles of the triangle. This is 90 degree right angle triangle and this is acute angle and this is also acute angle. Okay, this is the base, AB is the base. अच्छा, यहाँ अब कभी कभी कन्फ्यूज़न होती है कि बेस किसे लें और परपेंडिकुलर किसे लें. तो ये ध्यान रखना है कि जहाँ हमारा एक्यूट एंगल इस्टेब्लिश होता है उसकी अपोजिट साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है. ओके, देन इफ़ आवर एक्यूट एंगल इज़ देयर ऑन साइड ए, देन द परपेंडिकुलर इज़ ऑन बी सी. ओके, if the acute angle is on C, then the perpendicular is AB. Okay, so now I will give you some formulas and ratios of this chapter, then you can do the exercise 8.1 easily. Okay, but you have to learn all the formulas and the trick carefully. Okay, first of all, Pandit Badri Prasad har har bol. Okay, अब साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, कोट. अब ये कि साइन थीटा क्या है. थीटा मीन्स एंगल. विच एंगल? एक्यूट एंगल इज नोन एज थीटा. ओके, साइन थीटा इज इक्वल पी अपॉन एच. कोस थीटा बी अपॉन एच. tan theta p upon b. Cosec theta is reciprocal of sin theta. Okay, then we can write as h upon p, even 1 upon sin theta. Sec theta is also reciprocal of cos theta, then h upon b. We can write like this. Cot theta is also reciprocal of tan theta, then b upon p, 1 upon tan theta. For example, let's take sin A. Sin A means acute angle is established on A. Then sin A equal p upon h. Then perpendicular is this one, BC. Hypotenuse is AC. Okay, then cos theta equal, if we will take cos A, then b upon h. B is AB, then hypotenuse is AC, and so on. A equal p, tan A equal p upon h. P is BC, hypotenuse is AC. Then similarly cosec theta, sec theta and cot theta इसी तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं.